अच्छा मुझे बताओ जुबिली कौन सी फिल्म को कहते हैं? अब सिल्वर जुबली। हाँ 50 साल रहते हैं। नहीं 50 साल गोल्डन को पहले अपना नाम ले लो। 50 weeks 60 weeks Radio Nasha. One thing जो मुझे बहुत पसंद है, it's movies about movies. When there's an entire show that spans more than 5 episodes, मतलब मैं तो excited excited में एड्डा मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं and because for the interview of course हम ज़्यादा spoilers नहीं देना चाहेंगे, so you can watch this without any fear worry. You can watch the show when it drops on Amazon Prime. But as I was saying, मुझे फिल्में या shows about the movies बहुत पसंद हैं. Can I start with the origin आपसे कि where did this actually come from? तुम्हें हमेशा से एक show बनाना था about the movies of this era? So it's certain things. It's all blame it on alcohol. That's where ideas spark from. Okay. So yeah, it was one of those ideas that while you sort of like talk about, imagine, I think because we were in a moment, maybe about 10 years ago, we were in a moment where shows were the new movies, right? Like the water cooler conversations weren't about movies anymore. They were about like, have you seen Breaking Bad? Have you seen Game of Thrones? Have you seen Mad Men? And one of the things was like, what if we did like a really cool dramatic series about the golden age of the film industry? And one thing then led to another, and then it became like, okay, this idea really sticks, and then you sort of like go out there and make a pitch doc, and that then leads to like a storyline, and that leads to a script, and eventually it sort of like gathers some moss, and it eventually becomes what it is. But I think a lot of the passion for this comes from a lot of our own kind of like love for the movies, our own love for the medium, and our love for just being on movie sets, and a lot of how this stuff works. So it's as someone said, like, how do you do research? I'm like, boss, this is 25 years of research that is gone into just knowing and living and sort of like idolizing a lot of our past heroes. The past, yes. I must say that मुझे ये sets बहुत पसंद हैं. बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, सीधे ये सवाल पूछूंगी कि कहाँ है ये स्टूडियो, कहाँ शूट किया गया? और बाप रे, we shot in 6 cities in all over the place, and most of it is shot in Bombay. We shot the refugee camp in Lucknow, in this incredible place we found, which is this police reserve sort of like, which is actually these barracks which actually had a movie theater inside the barracks, which an outdoor movie theater which is actually just there. So we shot in Lucknow, we've shot in Delhi, we've shot in Mussoorie, we've shot in Sri Lanka. All the train sequences you saw were shot in Sri Lanka. Our main stuff, interiors were shot, all our studios, offices and stuff were shot inside a studio, but our Roy Talkies compound and our Bombay streets and all that was all shot in a ground in Dahisar, where we flat ground where we actually sort of like built the entire set and did set extensions and got a tram in to move. Yeah, that looks magical. The little 300 feet back and forth that it could actually. No, what fun! Actually, creating this world is the most fun. I'm gonna start with you, Apar. I'm gonna ask you, मेरी audience को ज़रूर बताइए कि आप जुबिली में कौन सा किरदार निभा रहे हैं, and उसके बाद हमें बताइए कि why do you think that you should have wanted to be part of this? एक कमाल का reason, because is it the love for the movies जैसे कि इन्होंने कहा, या something else? So मेरे कैरेक्टर का नाम विनोद दास / मदन कुमार है. I think जो रीज़न है वो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ वैसे तो, कि it is Vikram sir of course. ये love story. और मैं एक जगह ये भी बोल चुका हूँ जो बिल्कुल एक honest confession है, that this is one project of mine where I can't take any credit. जहाँ पर मुझे touchwood, without sounding too much, in most of my films, in the past 6 years, हर उस रिव्यू में कहीं ना कहीं 2 प्यारी बातें मुझे आप जैसे लोगों ने दी हैं. But this is a project जहाँ पर मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, because whatever little मैंने जो कुछ भी contribute किया है वो एक इंसान की वजह से किया है. This is not me there. And another thing, I don't know if after this कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ. So it's him, and then that's the only reason. Oh my God, it's an absolute delight. I don't know if I'm going to keep the part जहाँ पे तुमने / मदन कुमार कहा.
क्योंकि that is truly the dramatic motor कि Yeah. कौन बनेगा मदन कुमार. जी. आपको यही करना चाहिए था इस शो के टाइटल में कि कौन बनेगा मदन कुमार. There's another alternate Madan Kumar title, Madan Kumar. मदन कुमार. Yeah. मदन कुमार. Sorry. That's the other. Very gande jokes. Aditi, it's been a pleasure to see you recently doing a lot of great work. So सबसे पहले congratulations. Thank you. और मुझे भी बताओ सच्ची में निजी जीवन में भी क्या आप सिर्फ पीरियड कॉस्ट्यूम पहन के घूम रही हैं? ब्रश एक राउंड period से दूसरे ये साड़ी period. पहन के ब्रश करती हैं आजकल. कभी अनारकली के पीरियड में और कभी यहाँ पर. Seriously, right? कितना फन है टू प्ले आउटसाइड ऑफ द टाइम era, मुझे बताओ. It's amazing. है ना? Absolutely amazing. I mean, I don't know what to say. Apart from that, it's so magical, and also because when you go into a world that you don't really know, but I have to say, there is something so exciting about something that is partly historical or partly true, but there's a lot of creativity and there's a lot of creative liberties and licenses that are taken, and then you get to get into that world and literally play. Yeah. बिल्कुल. And it's so much fun, and I don't think, because it's a not suspension of belief, I don't know how to say, but it's like it's a world that we don't know, so when you are playing it out as a viewer, it needs to be believable. So it's like you just have to be lucky to be picked to be in that world. That's true. I agree. And I don't think you can ask for it, because it needs to work for the makers and it needs to work for the audience to say that okay, this person does wake up in a gharara maybe. मुझे तो लगता है कि रोज अदिति राव हैदरी ऐसे उठती हैं. Manish Malhotra actually asked me this girl to wakes up like I'm like no, I don't. हर सुबह उठती हैं और ईरा बदल जाता है. मंडे हम 40s में हैं, ट्यूसडे हम 70s में. I'm fine with it. Let this continue. It's great. It's too much fun. Absolutely. Especially कभी सुमित्रा. Seriously. Actually, if I get to work with it's so amazing. Like people who are on your wish list and people that you dream of working with, and you're like, I don't know if ever I will be able to be a part of that world. And then you get that opportunity and you're like, dreams come true. And it gives you that thing to, yes, I can keep dreaming. This is great. I can just literally keep dreaming and believing in unicorns. It'll happen. For sure. Amazing. Thank you so much for that. एक ऑब्जर्वेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इज दैट क्योंकि ये शो में लोग ऐसे नहीं बात कर रहे जैसे कि 40s इन द 40s बात करते थे. आई थिंक ये कॉन्शियस चॉइस था. यू गाइज आर स्पीकिंग लाइक रेगुलर पीपल. I don't know how to say that, but I hope you get what I'm saying. These are great choices because suddenly I'm like, hey, मेरे को सब सारी चीज़ें समझ में आ रही है. Also, it's easy for me to get into that world. लेकिन जब श्रीकांत रॉय जैसे एक पावरफुल इंसान को प्ले करना हो, how do you channelize power? कहाँ से आता है? Power, I don't know कहाँ से आता है power. आधी तो कास्टिंग हो जाती है. नहीं, cast, script, the character, the costume, the looks, and if you have a director like Vikram sir, pipe, and a pipe, and of course a bit of 40 years experience to be in this industry. Of course. So I'd seen a lot of ups and downs. So power also I know. I'd seen a lot of power. Power देखा भी है. Power चला गया वो भी देखा. वापस power आ गया वो भी देखा. So all those experience, and once you get a role like Shrikant Roy, you get excited. I mean, any actor will get excited to do something like a different version of Godfather kind of a thing. Absolutely. Because I love that opening sequence. It's shot at one of my favorite places in Mumbai, which is the Liberty Cinema. Yes. And just, watching people and the camera, traveling through that crowd. That is one of my, it's something that I'll never forget from the film. राम कपूर साहब के लिए एक बार तालियां हो क्या बात है. We miss him here. क्या आदमी है यार. आते ही कैरेक्टर आ जाता है. शो में कैरेक्टर आ जाता है. He's so fun. But I'll come back to you in just a little bit. Ma'am, let me tell you that there you are in that green. It's very. How excited are you to be part of this? जरा हमें बताओ. For me, it was किसने ये
हम पे हरा रंग डाला हुआ ना एक सेकंड वो माधुरी दीक्षित आइडेंटिफिकेशन हैवी था डेफिनेटली आई वाज टेलिंग देम पहले भी कि मैं देवदास की इतनी बड़ी फैन रही हूँ कि मैंने सिर्फ उसका ऐसे वो फिल्म लगा के VCR पे सिर्फ ऑडियो सुनती थी, टीवी खराब था तो सिर्फ ऑडियो सुनती रहती थी। एंड संजय सर की इतनी बड़ी फैन थी कि कभी ना कभी वक्त अगर मौका मिले तो उनके साथ काम, अगर किस्मत में हुआ तो काम करूँगी। लेकिन जैसे जैसे फिल्में देखती थी तो ये समझ में आता था कि ऐसी दुनिया बहुत सारे लोग नहीं क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। और बहुत बड़ा टास्क है ऐसा कुछ क्रिएट करना और उस दुनिया में जाना, और बहुत सारे पीरियड ड्रामास बन भी नहीं रहे हैं, ऑल्सो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। तो जब ये आया एंड आई रिमेंबर कि जब मेरा लुक टेस्ट था तो वो कॉस्ट्यूम पहना के एंड आई वाज लाइक ऐसा भी कुछ होने वाला है, यू नो, एंड वो कैरेक्टर ऐसा था, आई वाज लाइक ओह माय गॉड दिस इज लाइक ड्रीम कम ट्रू। एंड आई गॉट रिजेक्टेड फॉर नीलोफर पहले, नाइस, पैंडेमिक से पहले। देन पैंडेमिक के बाद शायद मैंने जो भी ड्रामा, नाटक, सबके अकल ठिकाने आ गए, छिछोरापन किया इंस्टाग्राम पे, he liked that too much and that's how he casted me and I was just so happy। मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग था जब गाना शूट हो रहा था, जब हम वहाँ पे, एंड कृति she was the choreographer and the steps, everything, it was so beautiful, the song is so beautiful, आपने तो देखा है, सुना है, इतना खूबसूरत है वो गाना। तो मेरे लिए तो इट वाज जस्ट ओवरवेलमिंग। मैं तो जितने दिन इस सेट पे गई हूँ मैं बस ऐसे लगता था कि वाह, मतलब, और एंड यू नो नॉर्मल किसी सेट पे जाना एक अलग, मतलब ऑब्वियसली वो नर्वसनेस और ओवरवेलमिंगनेस तो होती ही है, लेकिन यहाँ पे जब आप सेट पे पहुँचते हो तो आप किसी और दुनिया में होते हो, यू आर लाइक इंस्टेंटली ट्रांसपोर्टेड, यू नो, टू अनदर टाइम। तो हाँ, तो बहुत ओवरवेलमिंग था। बहुत बढ़िया यार, सुपर। भंसाली लाइट जीने का मौका मिला तुम्हें, मुबारक हो। मैं बोलने वाला था भंसाली लाइट। हाय, कौन हो तुम? सिर्फ अपने बारे में बताओ, ये सब बैठेंगे। क्या बताओ अपने बारे में, कौन हो, कहाँ से आए हो? जम्मू से हूँ मैं। हाँ जी। काफी वक्त हो गया बॉम्बे में। अच्छा। और बहुत सही वक्त पे ये शो आया मेरी जिंदगी में, और मेरी जिंदगी बदल गई। Okay. Siddhant, what I'm trying to say is that it is a truly fabulous part. Okay. Thank you. For somebody, I'm sure Apar, you would have loved to do this part. If I would have. मैं पहले बोल चुका, I would have loved to do any part in this show. Correct. You know? Correct. Yeah, So that's a compliment. Do you feel thank you. कि तुम भी उतने lucky हो to be playing this role? Oh, 100%। मैं सर से लिटरली सेट पे पूछता था, उससे पहले भी आई थिंक पूछा है कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि ये रोल मुझ तक पहुंचा है, ये बिकॉज कोई भी ए लिस्टर इस रोल को मना नहीं कर सकता। इट्स दैट वेल क्राफ्टेड एंड दैट वेल रिटन, और ऐसे रोल्स नहीं आते एक्टर्स के पास। एंड हियर आई एम, स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये कौन है, ये अजूबा। I mean, how someone has written this character? Who is this person? Why am I not this person? Why is everyone not this person? So that's how it began for me. It actually started with this one emotion, which is fascination. This character, ever since I read the script, it fascinated me, and that's what I actually held on to, and it kept fascinating me. You know, so the thing is, life fascinates this character, and this character fascinated me. So life started to fascinate me. So that was actually my journey. इतने fascinated that he's sitting like this. I love it. Yeah, no, oh sorry. Heels नहीं पहने ना इसलिए। No, I love it. No, please. This is great. Please be new. Yeah, I mean new पता नहीं comfortable लग रहा है, सुबह से बैठा हूँ। New बढ़िया है। You know, फिर तहजीब आ जाती है, फिर पता चल जाता है कि हमको कैसे क्या करना है। It's fun, no? It's so much fun to see this. I wish you luck. Thank you so much. I mean, it was fantastic. I'm going to take this to you now again. We'll do a quick round across the room. I want to know एक ऐसी फिल्म जिसकी वजह से हम फिल्मों में हैं। आप सब। एक ऐसी फिल्म जो मुझे और मेरी लाइफ को जोड़ती है, जोजिता वही सिकंदर। बड़ी दे दे। Yeah. So I mean that's my crux of life and everything together. Because वो sports और filmmaking दोनों को एक साथ लेकर चलती है। So that's my life. I mean Identification, रतन या संजू? That's a tough one, but of course, I mean, because
मैं घर का छोटा हूँ अच्छा। इसलिए हाँ नहीं only because मैं घर का छोटा हूँ. It is definitely not because I'm suddenly looking at Ayushman as Ratan. no don't I mean वही बोल रहा हूँ don't I mean मैं घर का छोटा हूँ सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ. इसीलिए. Otherwise for me Aamir Khan of my life of that film for me is always Ayush and nobody else. Oh man. Yes, so absolutely 200% sure about it. Okay, favorite scene from that film. फेवरेट सीन फ्रॉम दैट फिल्म जब दो हैं जब आमिर सर को नीचे दिखाया जा रहा होता है बाय पूजा वेदी वन सेकंड जब वो सीन जो क्लाइमैक्स है जब वो गियर शिफ्ट हो रहे होते हैं Change the gear, Sanju. just suddenly takes over and I think it is such a Goosebumps. yeah वो goosebumps एकदम से अभी याद कर रहा हूँ तो भी आ रहे हैं and yeah I mean I think it is beautiful to see that. What a great film to Yeah, pick. Thank yeah, you so much for that. Aditi? For me, Mani Ratnam and Bombay. And Oh. Manisha Koirala in Bombay. Oh, absolutely. Yeah, I didn't watch too many films growing up, especially not. I only watched child-friendly films, and I happened to see this, and I was like, "That's what I want to be." Yeah. And yeah, कहना ही क्या, and Manisha Koirala and. तुम्हें पता है ना Just कि ये वाइब तुम्हारी वाइब है. कहना ही क्या अगर दोबारा से बनती then you know we don't have to cast Aditi. Say it out louder. But you know when Universe में डालो. when I did Carter Valley Day with Manisa, I used to like literally pinch myself every day on set to say I'm doing a love story and Manisa is directing it, and when I was shooting that song in the snow, I didn't care whether my nose was red, blue, green, I had frostbite. I was just like, this is my कहना ही क्या moment. You're like yes Vadiya. Yeah, Class, literally. ma. Yeah. That's amazing. Thank you for sharing that. Vikram, you have to tell me. बहुत सारे हैं. कौन बहुत से? सारे. As a child, Amar Akbar Anthony, of course. I've seen that movie maybe 50, 60 times, whatever. Love it. It's been Favorite my scene? favorite scene. Obviously, I think the mirror scene becomes a favorite scene. But the most, I remember the most upsetting scene for me as a child used to be when Khurana beats up Amitabh Bachchan outside. In And he the beats basti him outside. damn badly. And he beats him. So how can he get beaten, yaar? And every time I see the movie, I still have the same feeling. कि इस बार मार देगा फिर भी. कि ये बदल जाएगा. ये अगले scene अगली बदल बार. Oh wow. Yeah, Maybe we can do that. Maybe that happens in another world that you create, जहाँ पर the films change. Yeah, but if I was Tarantino, I would do that. Yeah, exactly. Thank you for that. Bumara. मेरा नाम जोकर. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ है. क्या क्या बात. बात खाली खाली कुर्सियाँ रहेंगे. क्या बात That's our life. क्या बात क्या बात. Everything will come and go. We perform or has to perform. But ये फिल्म देखकर फिल्मों में आने का मन किया था. हाँ, मेरा नाम जोकर when I was like growing up like. Correct. और कहाँ देखी थी आपको याद है? Mrinalini Cinema Hall, Bengali, Dum Dum. So impressive. Yeah, and that time the film was not hit. बिल्कुल. Yeah, बिल्कुल. मेरा नाम जोकर was not a hit. But बाद में आदमी लोगों को पता चला कि film की the philosophy was very different. So like yeah, this is one. I mean, I can say a lot of films. Of course, for me, any of this Uttam Kumar's film is like very inspiring. Any of his films. Yes. Yeah. And Sanjeev Kumar, another very like one of my favorite actor. Kamal sir, Sankara Varanam, one of my very favorite film. Beautiful. Meghada Gatara, Ritik Ghatak. So these are the films which till today when I get a little upset, I start watching all these films. How lovely. Thank you for sharing. Didi. Stop being myself. मैं बहुत भूल गई हूँ यार. देवदास obviously. ऐसे तो बाद में बहुत सारी फिल्में obviously फिर शुरू, लेकिन देवदास मेरी मेमोरी बहुत खराब है, तो मुझे देवदास ऐसे याद है. दुनिया बटी है. When you say Devdas, you have to tell me देवदास, पारो या चंद्रमुखी. Who would you pick? Who would I pick? तीनों की जर्नीज बहुत ही मतलब अपने देखा जाए तो सबकी जर्नीज बहुत ही खूबसूरत सी और अप्स डाउन सबकी जर्नीज में है. बट देवदास फॉर श्योर बिकॉज जिस एक्सट्रीमिज्म में वो पहुंचता है, व्हाई नॉट, वुड लव टू. एंड इवन चंद्रमुखी फॉर दैट मैटर, जिस दुनिया से वो है और जिस तरीके से वो
सिर्फ प्यार में सब छोड़ देती है. It's so beautiful and सच इतना selfless love है कि जब पारो आती भी है उससे मिलने तो उसको पारो से कोई वो jealousy या फिर कुछ you know एक वो खराब नहीं फील करती है वो, क्योंकि जिसको वो प्यार करती है वो उसको प्यार करता है तो उसके दिल में भी उसके लिए प्यार है. मुझे इतनी खूबसूरत बात लगती है ये, you know, that there's so much love that वो hate की जगह ही नहीं है कहीं. बिल्कुल. तो या थैंक यू. उफ, we all हम सब चले गए देवदास में 5 मिनट में. Thank you. But देखिए no, हिंदी like फिल्में. बचपन में ना actually the only film that I can actually think of is जो जीता वही सिकंदर. हो गया. हाँ, तो I बोल know, दो. पर वो फिल्म वही फिल्म याद है मुझे as a film that has stayed with me. मुझे नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगा. मैं literally I think life somehow got me here. I was just supposed to become a pilot. I started modeling and then I started enjoying that and then I came to Bombay. The next step. Somehow I just landed up here. Thank God I did. All right. What we're going to do next is I'm going to ask you guys questions about, you know, Jublie. ठीक है? तो आप में से जो पहले आंसर करेगा वो है मदन कुमार. कौन बनेगा मदन कुमार? मदन कुमार. Are you ready for कौन बनेगा मदन Let's कुमार? सवाल पूछ जाएंगे, देखते हैं. ये हमारा आखिरी सेगमेंट है. ऑल द बेस्ट. game. अच्छा मुझे बताओ, कौन बनेगा मदन कुमार? जुबिली कौन सी फिल्म को कहते हैं? अब सिल्वर जुबली हाँ. 50 साल रहते हैं. तो नहीं, यार 50 साल रुको, नहीं. रुको. golden को पहले start अपना करेंगे. नाम ले लो. 60 weeks. 50 Let me weeks. tell. आप क्या एक्टर बोलेंगे? अच्छा नहीं. आप बताओ. 25 weeks is Silver Jubilee, 50 weeks is Golden Jubilee. And 75 weeks is Platinum Jubilee. Platinum Jubilee. And 100 weeks is Diamond Jubilee, I think. नहीं, Diamond Jubilee 100 weeks. 100. There's diamond also. Yes, yes. हाँ जी, हाँ जी. That's above Great. Platinum देखिए Jubilee, इनका Diamond. रिसर्च आपके शो करके भी इनको पता नहीं है. नहीं, बहुत टाइटल बढ़िया. बहुत बाद में है. Basically, Jubilee, whatever Jubilee it is, it's great. It's great. अच्छा दूसरा Win-win सवाल. situation. Vikram will not answer any of these questions. This is not fair. We- ये the होगा first- और Vikram नहीं First answer. one we will share. और ऊपर से रो इतनी Because बेइज्जती we were करने के very लिए confident शुक्रिया. about मैं it. 60 बोला और 50 में कितना फर्क है यार. बहुत फर्क है. अच्छा ये तो कोई नहीं जवाब देगा. मुझे पता है. इंडिया की पहली गोल्डन जुबिली फिल्म कौन सी थी? मुगले आजम शायद. I don't know. Good guess. Thank you. Good guess. मुझे भी नहीं पता था. It is a film called संत तुकाराम. Oh wow. ये तो संत तुकाराम को भी नहीं पता. Actually, it's a Marathi film that was the first ever Indian wow. film to run in a single आपको theater. पता है वामिका क्यों हंसी है? क्यों? वो इसलिए हंसी क्योंकि उनको लगा कि वो मान गए कि यही सही आंसर है. So cute. All right. इंडिया की पहली वो फिल्म बताएं जिसमें ऑन स्क्रीन किस था. Oh wow. राज कपूर सर की फिल्म थी. नहीं, देविका रानी. देविका रानी की फिल्म. Himanshu Rai. अच्युत कन्नड़. Himanshu Rai. Was it Ajit? No, it wasn't Ajit. फिल्म का नाम ना भी बताएंगे तो सही होगा. Doesn't matter because it is Devika Rani, Devika Rani and Himanshu Himanshu. Roy. Oh, It nice. was of course in the 30s, 33 में किस्मत. कर्मा नाम की फिल्म आई थी. Oh wow. बॉलीवुड में कौन से एक्टर का नाम जुबिली कुमार था? राजेंद्र कुमार. ये सबको पता Share. है. ये बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए सबको पता है वरना किसी को नहीं पता था. I don't speak. एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने 50s की दशक में हिंदी फिल्में बनाई. कोई Didn't नहीं. get you question. 50s. क्या question? गुरुदत्त. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. Okay. And the last मुझे one. लगा इतना आसान सवाल है मेरे पास तो 2-3 आंसर्स. Yeah, The like last it one. is- The क्या last सही one. सुन The last Big one. question. इंडिया की वो पहली फिल्म बताए जिन्होंने कांस में अपने आप के लिए नाम कमाया. सत्यजीत रे is पत्थर पंचाली. No. Oh damn it. Neecha Nagar. नीचा नगर इज द राइट Chetananand Neecha. 1946 में बिल्कुल सही. Oh wow, sir, how do you know everything about सर नोज everything? एवरीथिंग. तभी सर कप्तान है तभी हमारे. उनको अलाउड नहीं था लेकिन तब भी उन्होंने आंसर ऑलराइट. बहुत मजा आया. सीरीज बहुत कमाल है. I've never seen something like this and Oh, I'm very thank you. proud Thank you. that this is you know a show that we made and I think that's what I want Oh, to really say that ये Thank you for हमारा. saying Yeah. it's a show that we made, like you feel I that am watching part it. of Thank this. you. Obviously, Thank you. I am the audience. I demanded it. Yeah, thank you. Yeah. Wow, No, really. it's amazing to say something like this. Yeah, no, I love this. I love this show, and I really wish all of you luck. Thank you so much. So thank you for being on my show. Thank you so much. Radio Nasha.